हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज पुअर स्टैंडर्ड्स इन द क्लिनिकल एरिया। तो आप बोल सकते हो कि patient relative complaints, dirty untidy environment, so you can give all this answer and मैंने भी यही आंसर दिया था and yeah like I said मैंने इंटरव्यू क्लियर हो गया है। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन पे हो एंड आपको यूके आना है टू वर्क एज अ नर्स आउट हियर, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम कवरिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रही हूँ जो बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है NHS इंटरव्यू में। So yes, watch the video till the very end. Let's get the video started. But before that, I'll just give a brief introduction about myself. My name is Alicia Rai and I'm working as an RN in UK. So this is my YouTube channel. अगर आपने ये वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो you can subscribe to my channel. So without further delay, let's get the video started. एंड द फर्स्ट टॉपिक जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरव्यू के लिए, नॉट ओनली NHS, इज़ फर्स्टली आपको आपका इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। इंडीड इवन दो दे हैव योर CV बट यू कांट एक्सपेक्ट देम टू नो एवरीथिंग अबाउट यू, सो आई सजेस्ट कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत आप स्ट्रांगली प्रिपेयर करो। एंड सेकेंडली फॉर द NHS इंटरव्यूज़ आप इंश्योर करो दैट आप कहीं जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हो रिगार्डिंग दैट हॉस्पिटल, प्लीज़ हैव सम रिसर्च अबाउट द हॉस्पिटल बिफोर यू अप्लाई फॉर द इंटरव्यू बिकॉज ड्यूरिंग द इंटरव्यू वो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे रिगार्डिंग द हॉस्पिटल कि आप इस लोकेशन से कंफर्टेबल हो या नहीं, आपको कैसा लगा हमारा हॉस्पिटल। सो या इफ़ यू आर एन इंडियन या फिर आप दूसरी कंट्री से आप दे रहे हो इंटरव्यू, एटलीस्ट आप गूगल में जाके आप रिसर्च कर सकते हो। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टॉपिक जो आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हो बिकॉज इवन मेरे इंटरव्यू जब हुआ था, इवन दे आस्क्ड मी अबाउट द हॉस्पिटल। द अनदर थिंग इज हियर इन दिस कंट्री दे गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस एंड बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है NMC कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़ को। सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप थॉरली आप प्रिपेयर करो प्रोफेशनल वैल्यूज़ पे एंड NMC कोड ऑफ एथिक्स एंड कंडक्ट एंड 6 C's जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इस पे आप 100% फोकस करो बिकॉज डेफिनेटली 100% श्योर हूँ कि इससे आपको क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे एंड यू हैव टू बी प्रिटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए अगर आप NHS एज ए नर्स आप उस पर अप्लाई कर रहे हो तो। एंड कम्स अनदर थिंग इज इधर पे इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको पूछते नहीं है, आपको थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड रिलेटेड आपको फ्यू क्वेश्चंस आपको पूछेंगे एंड अदर देन दैट वो आपको थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड दे कैन आस्क अबाउट योर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है बिकॉज ये मेरे इंटरव्यू में भी आया था, इवन माई फ्रेंड्स गॉट इट एंड सो मेनी कलीग जो इंटरनेशनल नर्सेज है उन्होंने भी ये बताया, इवन दे गॉट द सेम क्वेश्चन। सो आप इसमें थोड़ा सा आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकते हो। एंड अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको स्किप नहीं करना है दैट इज़ अबाउट द डिमेंशिया ग्रुप एंड केयर अबाउट डिमेंशिया पेशेंट बिकॉज UK पे डिमेंशिया पेशेंट बहुत हाई रेट पे है। सो दे मोस्टली आस्क कि आप पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल डिमेंशिया पेशेंट्स को आप केयर कैसे दे सकते हो, हाउ डिफरेंटली आर यू गोना केयर अबाउट द डिमेंशिया पेशेंट्स। एंड नाउ वी आर डन विद द टॉपिक्स। अभी हम आपके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रीक्वेंटली आ सकता है और आया भी है उसके रिगार्डिंग मैंने एक फाइल बनाया है। सो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल दोज क्वेश्चंस। दैट इज फर्स्ट इज लाइक if you receive a complaint from a patient or relative, what will you do? So ऐसा क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू आपको पूछेंगे एंड यू कैन हैव योर ओन रिप्लाई। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कि टॉक टू पेशेंट्स और फैमिली अबाउट द सिचुएशंस एंड असेस इफ यू कैन डील विद द कंप्लेंट योरसेल्फ, डू दिस इन प्राइवेट एनवायरनमेंट एंड लिसन विदाउट इंटरप्टिंग, बी अवेयर ऑफ द बॉडी लैंग्वेज एंड सो ऑन। ये आपकी तरफ से आप क्वेश्चंस और आंसर, आपको क्वेश्चंस पता है, आप आंसर आपकी IELTS से आप दे सकते हो। एज ऑल सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, राइट? एंड अनदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन यू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कंप्लेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है। एंड अनदर क्वेश्चन इज द वॉट यू आर वर्किंग ऑन हैज फेल्ड इट्स इन्फेक्शन प्रिवेंशन ऑडिट, व्हाट इज योर रोल इन ensuring that it did not fail again, how would you get staff support? So ये क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
And other than that, how would you deal with a patient who has MRSA or CDF, infection control? So आपने बहुत सारी देखा होगा कि आपको इन्फेक्शन कंट्रोल रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पॉप आउट हो सकते हैं, एंड सो यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चंस. अनदर इज, ये क्वेश्चंस मेरे को भी आया था, दैट इज़ हाउ वुड यू डील विद कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्क प्लेस. सो आप अपना बताना कि आप मैं ये करूँगी वो करूँगी, आई प्रिवेंट दिस, आई नॉट डू दिस. सो yes, you can give your answer on that. And another question is, how would you ensure your documentation meets the NMC standards for record keeping? Would you recognize poor standards in the clinical area? तो आप बोल सकते हो कि patient relative complaints, dirty untidy environment. So you can give all this answer, and मैंने भी यही answer दिया था, and yeah, like I said, मैंने इंटरव्यू क्लियर हो गया है. Are administering medications to a 57-year-old lady and her heart rate is below 40. Her medications are paracetamol, warfarin, digoxin and amoxicillin. What action should you take and why? So ऐसा क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन जो आपके क्लिनिकल जजमेंट को टेस्ट करे, वो सारे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो आप नाउ बाय दिस वीडियो आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा कि आपको कैसा क्वेश्चंस पूछे गए. मोस्टली इट्स ऑल अबाउट योर क्लिनिकल जजमेंट, आपका प्रोफेशनल वैल्यूज़, NMC कोड्स एंड कंडक्ट एंड आवर स्कोप ऑफ प्रैक्टिस. आपको बस ये सब चीज़ों में आप फोकस करोगे तो आपका NHS इंटरव्यू 100% क्लियर हो जाएगा. So yes, that's all for today. अगर आपको ऐसा more questions चाहिए, then I can just send you a PDF and you can just DM me on my Instagram. Instagram का link नीचे description box पे है. Then I can be able to send you more questions, because सारा questions मैं इस video में करूँगी, then it's going to be very long video of course. And so yeah, I hope this video was quite helpful to you, and in case like I said, अगर आपको थोड़ा help चाहिए regarding this questions, then you can always DM me. I always reply. So yes, that's all for today. Don't forget to subscribe to my channel and stay connected. Bye bye.